Space and astronauts. We always talk about how astronauts travel to space, how they work over there, how they manage to live there. But I think there is one more aspect on which we don't talk much, that is how they came back to Earth. जो कि अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है पूरे क्रू के लिए एज वेल एज एस्ट्रोनॉट्स के लिए। स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ पर लैंड करवाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट जाके स्पेस स्टेशन से कनेक्ट होते हैं और फिर इसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं और देन वो अर्थ पर लैंड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है। इन स्पेसक्राफ्ट का अर्थ पर सेफली लैंड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। आप देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये जो लैंड करते हैं ये पानी में लैंड करते हैं ताकि एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस अर्थ पर लैंड करते हैं तो वो डीजीनेस जैसा फील करते हैं। इट्स बिकॉज उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है एज दे अडेप्ट टू द प्लैनेट्स ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द स्पेस। सो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डिलीवर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द हेड, जिसकी वजह से वो बहुत अनकॉन्शियस सा फील करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स री एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, they may feel a variety of physical sensation due to sudden change in gravity and the aerodynamics forces acting on the spacecraft. We can see कि कैप्सूल ने एक सॉफ्ट लैंडिंग ले ली है ओशियन में। अब इस कैप्सूल को एग्जामिन किया जाएगा रेस्क्यू टीम के थ्रू एंड देन रिकवरी वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट उससे पहले एक जो सेफ्टी मेज़र होता है वो बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, कैप्सूल्स को अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जाता है। Once open, a SpaceX medical doctor will be the first one to check in on Chell, Bob, Jessica, and Samantha and see if they are ready for egress or getting out. And you see that motion underway now as Dragon is lifted into the nest. This is a very cool view and cool process as we lift the Dragon vehicle, and you can see the nest there that it's going to be sat down into. While Dragon's top hatch is used to connect to the space station, the astronauts will egress from the Dragon's side hatch, pending capsule orientation in the water. Now, before opening the hatch, the spacecraft's cabin pressure must be equalized with the outside environment. Once the hatch is opened, that will be the crew's first breath of fresh air since boarding Dragon at the start of their mission back in April. So it is important to note that Chell, Bob, Jessica, and Samantha will be getting some assistance from the recovery team while they are exiting the capsule. This is the same process for any returning long-duration crew members, as returning to a gravity environment can wreak havoc with our vestibular system responsible for maintaining balance and motion. And of course, safety is always our #1 priority. So you'll see Chell, Bob, Jessica, and Samantha helped out of the capsule and assisted the few feet to the medical quarters aboard the boat. And if you've ever watched crews return on a Soyuz mission, this is the same process as when astronauts are carried from the capsule to waiting chairs and then carried to a waiting medical tent. So it looks like we are getting views now of Dragon in the nest, successfully lifted up out of the water. And so once the crew egresses the capsule, this is a period where any time-critical cargo can also be recovered from the spacecraft, with the remainder waiting. Freedom, SpaceX, welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are going to be completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there as Dragon sits in the nest there, and you did hear some comms. What they're going to do is, once they derig this, they will slide the Dragon vehicle to a platform where
the astronauts can easily exit that side hatch there.